Good morning. My name is Surendra Kumar Rajput. I am BTech graduate and currently I am pursuing a data analysis course from the Trinity. This is our project, Rank Loan Case Study. These are our tasks. So today we have to discuss in this video about these tasks. So start करते हैं. पहले हम डेटा क्लीनिंग पे काम करेंगे जिससे कि जो हमारे टास्क हैं वो आसानी से हम सॉल्व कर सकें. तो लेट्स मूव टू द एक्सेल. सो दीज आर अवर एक्सेल सीट्स. यहाँ पे हमने जो अपनी सीट है यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ओपन की है और उसके बाद हमने डेटा को क्लीन किया है जो कि नल वैल्यूज हुई. नल वैल्यूज थी, एम्प्टी वैल्यूज थी, जिन कॉलम्स का हम इस्तेमाल नहीं था उनको हटा दिया गया है और एक एक करके हमने अपना डेटा क्लीन कर लिया है और हमने उसके बाद डेटा को मर्ज भी किया है. डेटा को मर्ज करने के बाद हमने उसको विजुअलाइज किया और एक एक करके हमारे जो भी टास्क थे उनको कंप्लीट किया है. हमने यहाँ पे पिवट टेबल का इस्तेमाल किया है और उसके थ्रू हमने डेटा को विजुअलाइज भी किया है. तो चलते हैं पीपीटी की तरफ जिससे कि हम इसको और आसान तरीके से समझ सकें जो कि मैंने प्रिपेयर किया है. तो यह हमारी पीपीटी है जो कि मैंने बैंक लोन केस स्टडी के लिए प्रिपेयर की है. तो एक एक करके हम जो सीट्स है हमारी उनको डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं. तो यह हमारा डिस्क्रिप्शन है जो कि इस जो हमारा केस है इसके लिए हमने तैयार किया है. एक एक करके आगे चलते हैं. ये हमारी अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग. अंडरस्टैंडिंग द डेटा. तो इसमें क्या है जो हमारी तीनों फाइल्स हैं उनको हमने क्या है सबसे पहले एक्सेल में ओपन किया है, उनकी क्लीनिंग किया है और जो हमें यूजफुल डेटा है सिर्फ वही रखा है और बाकी सबको रिमूव कर दिया गया. तो ये हमारी तीनों फाइल्स थी. आगे की सीट में चलते हैं. ये हमारी फाइल 1 है, एप्लीकेशन डेटा. इसमें हमारे 122 कॉलम्स हैं एंड 3,07,511 रोज है और कॉलम विथ नल वैल्यूज 64. तो ये हमने इसको विजुलाइज किया है एक ग्राफ के थ्रू. आगे नेक्स्ट सीट में चलते हैं. ये हमारा डेटा क्लीनिंग के लिए हमने यूज किया है. जो हमें ड्रॉप करने थे कॉलम्स वो हमने कॉलम ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं एंड we see there are 41 columns with missing values greater than 50%. We will drop those columns. These are the column which mainly contain the residential details of the client. Okay, so next हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो ये हमने डेटा क्लीनिंग के लिए यूज किया था और आगे की सीट में हम चलते हैं जिसमें हमें नल वैल्यूज कॉलम्स टू फिल नल वैल्यूज जिसमें हमें कॉलम में नल वैल्यूज थे. वी हैव 26 columns where the number of missing value are less than 50%. We have a closer look if there are any column or of less than significance that can be removed. If not, we had imputed the continuous feature having nulls with means median depending on the effect of outliers, and we had fill categories features with mode. Okay, so हम अगले सीट में आ गए हैं. इसमें columns to fill null. We have 26 columns where the number of missing value are less than 50%. We have a closer look and decide to drop 9 more features. Dropping the null rows. Since there are less than 15 rows in the entire data set of 3,07,512 which are nulls in the below feature, we have decided to drop the nulls from the below features. फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट सीट में मीडियन को कैलकुलेट किया है और इसको प्रेजेंट भी किया है एम्प्टी गुड प्राइस. देन हमने मीडियन इम्प्यूटेशन किया है और इसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी की है. दे आर द discrete columns with outliers, hence we impute them with median. Median and mode
इम्पुटेशन। सो हमने यहाँ पे मीडियन को कैलकुलेट किया है और उसके साथ उसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। There are discrete columns with the presence of outliers, hence we impute them with median mode, which are giving us the same value 0. In next sheet, this is the mode imputation. So these are the name type suited and occupation type. And then we reach to the next sheet, and this is the outliers. We find the presence of outliers in AMT income total, where one of the outlier is this number 117 and 60, which is an extremely high salary to EM. We find two outliers in days worth. We find few outliers in days employed, wherein we find people being employed for over 1000 years, which I impulse. And this is our outliers data. So next, understanding the data file 2. This is the previous application data. और जो सेकंड हमारी फाइल है उसमें हमारे 37 कॉलम्स हैं और रोज है 16,70,240 and columns with null values 15. इसमें हमने कॉलम ड्रॉप किया है डेटा क्लीनिंग के थ्रू. वी सी देयर आर 4 columns with missing value greater than 50%. We will drop those columns. Unnecessary column to drop. On further analysis, we come to a conclusion that the mentioned column do not have any effect on the loans or its repayment. Hence, we drop them. Dropping the null rows, we have a very small percentage of data missing from product combination 0.02 and excess data available with us as Excel cannot load the entire data. We decide to drop the null rows from product combination. Then हमने मीडियम को कैलकुलेट किया है और हमने उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. Median impute as we have outliers present. Custom value imputation. And this is our custom value imputation sheet. Mode imputation. Count of NFLC insured on approval. तो हमने इसमें मोड imputation काउंट किया है. And this is our outliers for second sheet. We find the presence of a few outliers in days decision which indicate the time taken for the decision was too high, which is not a good sign for any business. We find a large number of outliers in AMT goods price, AMT application, AMT credit, and AMT annuity. We find a few outliers in CNT payment. And next sheet, this is the data imbalance. We see that we have 91% as loan repayers, 9% as defaulters, which gives us a clear indication that the data is highly imbalanced. This is our representation, and this is with the A's, a univariate variate segment univariate analysis. With the A's, we see that the majority of the client are in the A's group from 30 to 50. We see a trend as the age increase, the chance of defaulting decrease. जैसे जैसे एज बढ़ती है और जो हमारे डिफॉल्टिंग के चांस है वो कम हो रहे हैं, हम इसमें देख सकते हैं क्लियरली. एंड years employed, we see that majority of the client are in the age group of 30 to 35, and in the other graph we see a trend years of experience increase, the chance of defaulting are decreased linearly, and as a bank the older people would be the safest bet to provide loans. Yes. And name contract type and name contract type certificate. The number of cash loan taken are
significant, significantly higher than the revolving loans. The default percentage stood at cash loans 8.914 and revolving loans 5.428. In the next, this is the number of loans taken female client are significantly higher than the males. जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लोन ले रही हैं. Majority of the clients be while taking the loans followed by family. And this is our next sheet. And name family status. The number of the loans taken by the married client are the highest and the people who are separated and widows are the least. Widows are 5.997 and civil marriage 10.335. The numbers of loans taken by married client are the highest and the people who are separated widow are least. So this is our business entity type 3 are the clients who taken the maximum loans. The number of loans taken by the married clients highest. So this is our majority of the loans are taken between the range 24 2 lakh 45,000 to 5 lakh 45,000 and the highest defaulters are 5 lakh 45,000 to 6 lakh 45,000. The majority of the clients are in the income range 8 lakh 85,000 85,650 to 2 lakh 25,650. This is our representation. The number of loan taken by the client with no children. This graph of represent here, and the other graph shows the default percentage rising as the CNT child rises. In the next sheet, we move to the next sheet. Most of the client are from reason rating. This is about the next sheet. This is the next sheet. The highest loan taken were from social circle 0. The highest default rating was from social circle 0.5 and the least from 6 to 34. In the next sheet, the majority of the previous loan taken were for this, and the majority of the defaulters were the client who took the loans for hobby. These graphs represent both of the cases. And the table previous application names, contract status, majority of the previous loans were approved. And in the graph, the blue color is represent approved, and the orange color represent cancelled, and purple color represent refuse, and yellow color represent unused offer. So move to the next sheet. This is the segment by varied analysis. As the age increase, the credit amount also increase. This may be because of the fact that the older people tend to default a lot lesser than the younger ones. So this graph represent age versus average credit amount. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो क्रेडिट अमाउंट है अकाउंट्स में वो बढ़ रहा है, और जो